Hello students, today we are going to start with our next unit. Today we are going to discuss cost, marginal costing, absorption costing, cost volume profit analysis, make or buy decision, and product mix decision. Okay, so let's start. Firstly, we'll talk about marginal costing. Now, what is this marginal costing, students? Marginal costing is nothing but it's accounting technique that is used for decision making. It involves analyzing only the variable cost, students, which is incurred in the production process when you are treating fixed cost as your period cost. So this approach will help you, the business, in short-term decision making, optimizing the resource allocation, maximizing profitability. Okay. So in short, you can say that marginal costing is the differentiation that we get between your fixed cost and the variable cost. All the costs are classified into fixed, into variable. Only a variable cost are considered as the product cost, and fixed costs are related with your period. Okay. Some classification in marginal costing that we just now spoke about, fixed and variable. अब यह फिक्स्ड और वेरिएबल क्या होता है? जैसे वर्ड वेरिएबल, आपको वेरिएबल वर्ड से ही पता चलेगा. वेरिएबल मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग. दैट मीन्स द कॉस्ट दैट चेंजेस डायरेक्टली with your level of production, students. जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल है, then we have direct labor, variable overheads. तो ये जो चेंज होता है कॉस्ट, that is your variable cost, which cannot remain fixed. Like depreciation also. You cannot say what would be the net depreciation for the next year. It will obviously change. It cannot be static. Then comes fixed cost. Fixed matlab जो same रहेगा, which will not change, which remains constant irrespective, student, of the production level. जैसे आपका रेंट है, सैलरी है, depreciation if it is on fixed cost method. So that is where we have fixed cost in consideration. So when you talk about marginal costing, students, only the variable costs are used when you determine your product. But when you want to determine the period part, you will consider the fixed cost entirely when they incur. Okay. So let's take one example. Assume that a company manufactures pens. The cost per pen are direct material is 10 rupees, direct labor is 5, variable overhead is 2, and fixed cost per period is 1 lakh. Now, what are we going to calculate? Yes, what is your fixed cost? What is your variable cost for that particular period? Okay. Now, I'll show it over here. Fine. So, if you, 1 minute. Okay. So, if you notice over your students, if you see, let me just take a little bit. Okay.
So if you see over here, the variable cost that we have in this sum example, what would be a variable cost? कौन कौन से आइटम्स वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे आप बताइए मुझे. I just want to know in this sum what is your variable cost amount and what is your fixed cost amount. Okay, nothing else, no other thing. Post it in the chat box. What would be the answer? Students, don't raise your hands now. If you have any concern, post it in the chat box. Yes, quickly. 17. Okay. Very good, Bharat. Machine. Okay, very good. Fine. Anup. Then Ame. Many have you all posted. Okay, great. So, वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होगा आपका. डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होगा, दैट इज 10. डायरेक्ट लेबर इज वेरिएबल, दैट इज 5. एंड वेरिएबल ओवरहेड्स नाम में ही वेरिएबल है. सो योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? 17 रुपीज. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू फिक्स्ड कॉस्ट. अब फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास एक ही है, that is fixed cost for the period is 1 lakh. So fixed cost will remain 1 lakh only. So this is just a small example. How do you classify or how do you understand what is your total variable and your total fixed? Okay, so if something like small comes in the exam for smaller marks, so you can easily write it. Okay, fine. Then we'll move on to the next one. Let me just erase this. Okay. Next, we are going to talk about is the contribution margin. Now, what is contribution margin, students? Contribution margin means एक portion of sales revenue जो आपको contribute करता है profit generate करने के लिए, जो आपके fixed cost को cover करता है. Okay, so the formula that we used for contribution is sales minus variable cost. You have to remember this. See, ये chapter में आपको ये unit में formulas है. So you have to remember the formulas. Otherwise, you won't be able to solve the sums. Okay? If you know the formulas, easily you can solve the sum. Now, the formula for contribution is sales minus variable cost or selling price per unit minus variable cost per unit. Okay? Clear? Fine. So let's take again an example to understand this. How do we calculate? The selling price of a pen is 25 and the variable cost per pen is 17. तो आप लोग मुझे बताइए contribution कितना होगा? Yes, tell me what would be the contribution. Superb, superb, very good, very good. Everybody are giving me the correct answer. Yes, great. See, there are so many answers which are rolling out, so I cannot take so many names. So yes, but those who have answered me, all those are correct. The answer is 8. अब आप बोलोगे 8 कैसे आया मैम? So C, that is contribution is equal to selling price हमें कितना दिया है? 25. So that is 25 minus variable cost कितना दिया है आपको? 17. So 25 minus 17 comes out to 8 rupees. Clear? Easy? Yes, product profit. Yes, Atul, you're right. Okay, fine. Great. So let's move to the next one now. See, I am taking this small examples because आपको तो concept clear होगा, otherwise concept आपको clear नहीं होगा कि उसको क्या बोलते हैं. See, I am already louder. Please check it from your end, the network.
Hasikul, I cannot teach accounts in Hindi. It's not that I cannot teach in Hindi. आपको एग्जाम हिंदी में नहीं लिखना है, इट्स इन इंग्लिश। तो मैं आपको कंट्रीब्यूशन को हिंदी में नहीं बोल सकती। यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट कंट्रीब्यूशन वर्ड इन हिंदी, so please understand you have to write it in English. Okay, anyways I'm going very slow so that the students understand it properly. जहां जहां पॉसिबल है आई विल यूज हिंदी, नॉट बट नॉट ऑल 100% हिंदी। Okay, now what are the advantages of this marginal costing? Okay, now we'll understand one by one. First is it is easy to operate, students. That means जो marginal costing है, it's a simple method compared to the other costing like absorption costing, जो आपके सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करता है। ओके, अब व्हाई इज इट इजी टू ऑपरेट? बिकॉज यहाँ पे नो नीड टू एलोकेट फिक्स कॉस्ट टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट। इट इज सुटेबल फॉर द बिजनेस दैट रिक्वायर्स क्विक रिलायबल डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Let's say if a company produces multiple products, the marginal costing will focus on what? Variable cost, like जैसे कि आपका raw materials है, जैसे कि आपका labor है. So for a product that cost 100 in material, labor and sales for 150, तो उसमें आपका contribution कितना निकला? 50, because material and labor is your variable and you sold it for 150, that is your sales price, जो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था. So 150 minus 100 comes out to how much? 50. So जैसे कि आपके फिक्स कॉस्ट है, रेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, वो आप नहीं यूज करते टू डिवाइड अमॉन्ग प्रोडक्ट्स so that the process gets simple. Okay, Tarini, you want me to remove you from the class? What is this Instagram ID and all? You're not allowed to use this over here. Saurav, you all are here for learning, not for Insta IDs. If you all want something personal, you all can move out of the class. If this is followed again, I will disable the chat. So जो दूसरे लोग easily question कर रहे हैं ना, जो genuinely questions कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, they won't be able to because of you silly people. So this is the last warning that I'm giving you all. Otherwise, I'll take a screenshot and send it to your higher authorities. ओके, पीरियड का मतलब होता है टाइम. 1 साल, 2 साल, 3 साल. पीरियड मतलब क्या? टाइम लाइन. ओके, now the next advantage is useful for managerial decision making. Now marginal costing, students, provides you a clear insight कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, जो बहुत यूजफुल हो जाएगा फॉर शॉर्ट टर्म मैनेजरियल डिसीजन. जैसे कि आपको प्राइसिंग डिसीजन लेना है, मेक और बाय डिसीजन लेना है. अब मेक और बाय डिसीजन क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट आई टेल यू इन शॉर्ट. मेक मतलब आप खुद बनाओगे कंपनी में वो प्रोडक्ट. बाय मतलब यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो ये डिसीजंस आप इजीली ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. Then comes no problem of over or under absorptions of overhead. In absorption costing, overheads like fixed cost are absorbed. जितने आपके एब्जॉर्प्शंस होते हैं, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट लेवल्स होते हैं, जिसके वजह से क्या ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शंस होगा. ओके,
But here, there is no problem of over and under because you're only considering which cost? Variable cost. Techniques can be used along with other techniques. That means marginal costing is flexible, students. You can use this with other techniques like standard costing, budgetary control. So इससे क्या होगा? Business will maintain consistency. They can easily take the decisions in the company. They can set the benchmark for performance, allocate cost based on what is the actual activities. तो ये सब चीजें आसानी से हो जाएगी because you are aware about the information that you got from marginal cost. Shows the relative contribution to profit. Marginal costing highlights students how much each department, product, or business segment contributes to overall profit. So when you focus on your contribution, that is sales minus variable cost जो हमने किया था, उससे बिजनेस को इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. ओके, सो यू कैन इजीली नो विच एरिया शुड बी प्रायोरिटाइज्ड. Now some disadvantages of marginal costing, students. Uh, uh, Riyanka, if you can just disable the chats. Don't give them option because they are distracting other students now. Riyanka, are you there? Done, ma'am. Okay. Because the students are also complaining that it should be disabled, better be disabled. Fine. Disadvantages. Now, involves technical difficulty. Now, what does this mean involves technical difficulty? See, although marginal costing, students, simplifies the process only by focusing on what? Variable cost, right? But identifying, separating variable and fixed could be difficult ना. आपको पता है कि मुझे सिर्फ वेरिएबल ही कंसिडर करना है, बट उसके पहले आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा कि फिक्स कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है. करेक्ट. So that is a challenging task. Then comes your value of stock cannot be accepted by taxation authorities. That means under marginal costing, only variable costs are included in the valuation of inventories. जिसके वजह से क्या होगा? लोअर वैल्यूएशन होगा इन्वेंट्री कंपेयर्ड टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों यूज करते हैं. तो टैक्स अथॉरिटीज नॉर्मली क्या देखते हैं? दे प्रेफर हाई स्टॉक वैल्यूएशन, बिकॉज हाई स्टॉक वैल्यूएशन होने से क्या होगा? उनका टैक्स ज्यादा मिलेगा, उनको टैक्सेबल इनकम. ओके. कैन नॉट बी अप्लाइड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग स्टूडेंट्स इज नॉट सूटेड फॉर इंडस्ट्रीज जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करता है, जैसे कि you can say construction based, or you can say any building based. Okay, जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंसिडर किया जाता है. बट यहाँ पे हम मार्जिनल में सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं? ओनली वेरिएबल पार्ट. डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होल्ड गुड ओनली इन द शॉर्ट रन. Now, marginal costing, students, operates on the assumption that fixed costs remain constant. हमारा ये assumption है, okay? There is no such hard and fast rule. Variable cost fluctuates. But ये assumption कब true होगा? Only for shorter period of time. Long run में हो सकता है आपका fixed cost भी change हो जाए. Like factors, आपने expansion of contraction किया,
कोई न्यू मशीनरी को परचेज कर लिया, रेंटल एग्रीमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कोई चेंजेस आ गई, तो उस टाइम पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो सकता है। करेक्ट, सो दिस ओनली अप्लाइज इन द शॉर्ट रन, नॉट इन द लॉन्ग, then not unique from the point of cost transfer. Marginal costing is useful for short-term decision students. It does not provide you a comprehensive system for cost. It focuses students only on variable cost. That's all. So that's a disadvantage. So in short, आपको क्या समझ आ रहा है ये marginal costing में? That it differentiate between fixed and variable. It only focuses on your variable cost, not your fixed cost. Okay. Next, we are going to discuss the absorption costing. But before we move here, firstly, we'll understand what is absorption. अब absorption costing क्या होगा? जहां पे आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए. Okay, that is your absorption. Very simple. What are the advantages for students? It includes with GAAP and IFRS. What is GAAP? Any idea? GAAP is generally accepted accounting principles. So absorption costing is required by GAAP and IFRS for external reporting. IFRS is internal financial reporting standard. So ये दोनों क्या इंश्योर करते हैं दैट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट. एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है. दे दोज आर लीगली कंप्लायंट स्टूडेंट, जिसके वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर्स, आपके क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, दे विल बिकम मोर रिलायबल विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now, what are the disadvantages? Let us discuss that. Complex. Absorption costing requires allocation students of your fixed cost, which could be complex, especially when you are dealing in the multiple products or business lines, जहाँ पे आपको बहुत सारा सब्जेक्टिव डिसीजंस लेना होगा, अजम्पशंस करने होगा, तो जिससे क्या होगा, वन पीरियड से अदर पीरियड आपके डिसीजंस वैरी करेंगे. It does not separate your fixed and variable cost. That means absorption costing जो है ये differentiate नहीं करता variable और fixed cost के अंदर. It can be less useful when you take a short-term decision where managers needs to focus on the variable cost. It can lead to underpricing or overpricing. That means the fixed costs are spread students across units जहाँ पे risk होता है. So it can lead to what? Over and underpricing. Fine. So these are some of the advantages and disadvantages. Next, we are going to discuss about is cost volume profit analysis. That is CVP analysis. Now, what is cost volume profit analysis? ये आपको ये चीज बताएगा कि कंपनी का कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का रिलेशनशिप क्या है. What is the cost and what is the output on which the company is earning the profit? This is an extension, students, to your marginal costing. Okay, it determines how there is a change in the cost. किस तरह से fixed cost, variable cost change होते हैं. The formula that you use in CVP, that is cost volume profit, is PV ratio, that is profit volume ratio. The formula is contribution divided by sales into 100. And how do you calculate contribution? जो हमने किया था थोड़े टाइम पहले in the start of the session, that is sales minus variable cost.
Now, what is the objective, students, of this cost volume profit analysis? Now, this cost volume profit analysis will help you to forecast the profit fairly, accurately, because it is very essential to know what is the relationship between the profit and cost on the one hand and the volume on the other hand. कि कितने यूनिट्स में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने कॉस्ट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ. ओके. Also, this analysis is useful in setting up flexible budgets. We know that sales are variable. दोनों चीज चेंज होती रहेगी depending upon the volume. So it is very essential to understand the budget first. Also, this analysis will help you in evaluation, students, of the performance. That is for the purpose of control. It is necessary. आपको evaluation करना पड़ेगा इस चीज का कि आपका खर्चा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ. Also, cost volume profit helps you in formulating the price policies, that is by showing the effect of different prices on cost and profit, because pricing plays a very important role, right? We all know. Identifies the amount of overhead cost that is to be charged. Okay. So it analyzes, students, what is the amount of overheads that you are supposed to be charged to various levels of production. And lastly, it helps the management in deciding whether to make that product, whether to buy that product, whether to drop the product. Okay. That means drop the product means skip to some other alternatives. Okay. Fine. Okay. Just a minute. Hold on. Yes, Bhuvan, what happened? So many people have raised their hand. क्या हो गया? Yes, मैम Bhuvan, what कॉस्ट happened? वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का जो आपने फॉर्मूला बताया था एक बार फिर से बता देंगे. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का क्या बताया था? फॉर्मूला फॉर्मूला बताया था ना आपने, एक बार फिर से फॉर्मूला. बता ओके, फॉर्मूला. या. दें. The commonly used formula is PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. अब इसमें कंट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग में करके देखा था किस तरह से करते हैं. सो कंट्रीब्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. हम इसके सम्स करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, डोंट वरी. Okay, if it is resolved, please lower down your hand. Arpit, what happened? मैम मुझे दोबारा से कर बता दीजिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का वो, कि हम कैसे उसको वो कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन का अच्छा, ठीक एसपीवी. है, आप मुझे बताइए कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा. जी करेक्ट. जी मैम. वॉल्यूम का यस मतलब मैम. होता है कि आपने कितना प्रोडक्शन वॉल्यूम किया, मतलब कितना प्रोड्यूस किया है, इन शॉर्ट. एंड हम्म. प्रॉफिट. तो आपका जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. आप कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो उतने आपके हम्म. खर्चे बढ़ेंगे. तो आप हम्म. ये देखोगे कि मेरे कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, एग्जांपल प्रोडक्ट्स, ओके, वॉल्यूम ऑफ हम्म. प्रोडक्ट्स में मेरे को कितना कॉस्ट लग रहा है, वो हिसाब से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी. मैम जैसे उसका अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम हाँ, एसपीवी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करें, तो कंट्रीब्यूशन का तो हमारा फॉर्मूला आ रहा है कि हम जो है क्या कहते हैं सेल्स इसको, माइनस वेरिएबल. हाँ हाँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कर रहे हैं. बट जो हमारा राइट. एसपीवी है, तो एसपीवी हाँ, का कैसे करेंगे? जैसे हमारा फॉर्मूला एसपीवी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन तो हमारा निकल के आ गया नीचे, सेलिंग प्राइस माइनस हमारा ये वेरिएबल you are प्राइस. using different formulas. So there are multiple formulas that you have for cost, volume, profit. Okay. So this is the formula that you have to use. आपको सम्स भी इसी बेसिस पे आएंगे.
There are many levels of formula that you have. Arpit? यस मैम। हाँ, एक पीवी रेशियो के मल्टीपल्स फॉर्मूला है, but what I said you all that you have to use this formula. So accordingly, the sums that you will be getting, that will be also related to this only. So ओके don't मैडम। refer any other formulas. Yeah. If required, I'll let you all know. ओके मैडम। Okay. Yeah. ओके मैम। Yes, Vikas. मैम मुझे ओवरहेड कॉस्ट बताएंगे क्या प्लीज? ओवरहेड, ओके, ओवरहेड का मतलब होता है ना खर्चा। ओके, सो ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट को आप 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे, ठीक है। आपके टोटल खर्चे कितने हुए? अब आपके खर्चे हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, आपके खर्चे हो सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, आपके खर्चे हो सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये सबका टोटल कॉस्ट इन द सेंस ओवरहेड को टोटल आप कर लोगे तो आपका कितना कॉस्ट आया, दैट इज योर ओवरहेड कॉस्ट। नाउ क्लियर? ओके। या। Yeah, in short, overhead is expenses. ओके, थैंक Yeah. Yes, Sudhir. Yeah, Sudhir, unmute. या या गुड इवनिंग मैम। मैम, फर्स्ट स्लाइड में आपने बताया था जो लेबर कॉस्ट है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, बट मैन पावर कॉस्ट तो मैम फिक्स्ड कॉस्ट होता है जहां तक मेरी नॉलेज है। ये तो मैन वेरिएबल कॉस्ट पावर में कैसे? सैलरी, क्योंकि साल मैन, भर किसी पर्सन को हम रखते हैं, अपने एम्प्लॉय कर देते हैं, तो फिक्स सैलरी है साल भर के लिए उसकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी। हम्म। मैंने सैलरी वर्ड कहाँ पे यूज किया था? फिक्स्ड कॉस्ट में यूज किया था। वेजेस आप फिक्स कॉस्ट में ले जाओगे, बट लेबर कॉस्ट इन द सेंस आपके लेबरर्स कुड चेंज, राइट? तो जैसे हम्म। आपके कंपनी में 10 लेबर है, उसके बाद 12 हो गए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोडक्शन इन द मार्केट, राइट? आपको कितना प्रोड्यूस करना है, अगर ज्यादा डिमांड आ गई प्रोडक्शन की तो आप ज्यादा लेबर्स को हायर करोगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लेबर कॉस्ट। उनका सैलरी एंड वेजेस विल बी फिक्स, बट लेबर्स को आप फिक्स नहीं रख सकते ना। अगर आपके पास पीक आ गया तो आप क्या, जो 20 लोगों से करना चाहिए, क्या 10 लोग वो काम कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, दैट टाइम इट वुड चेंज। या फिर आपके पास काम नहीं है तो सिर्फ दो हम्म। लोग काम करेंगे उस टाइम पे। सो दैट इट इज मींस, दैट लेबर। ओके, इट मींस दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर, दैट इज वेरिएबल Exactly. कॉस्ट। हाँ, but we cannot say your laborers or contractual. We have to use the accounting term laborers. ओके, Clear? फाइन। Yeah. ओके, फाइन, थैंक यू। Welcome. Yes, Varun. Varun, any doubts? Okay. Uh, Kamling. Yes, Uh, unmute. ma'am, to understand this topic, the unit, can you suggest me some books or anything? Or this is There enough? is no Because I'm such. really not This is understanding enough. some terms exactly. Uh, don't worry, you will understand gradually. So might be you must have missed the first session. That is No, the no, I haven't missed a introductory single session. session of yours. नो, ओके। सो सी, इट्स लाइक, कैसा है ना कि आप लोग ये एकदम प्रॉपर इंग्लिश वे में न समझ के, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता है ना, जस्ट अंडरस्टैंड इट इन द नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज। लाइक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सुन के हम सब शॉक हो जाते हैं कि ये क्या नई चीज आ गई, बट इसको आप ब्रेक करिए। कॉस्ट का मतलब हमें पता है, वॉल्यूम का मतलब भी हमें पता है, प्रॉफिट का मतलब भी हमें पता है। तो जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आई नो द Oh, अकाउंटिंग टर्म्स आर देयर विच आर लिटिल ट्रिकी, सो दैट इज yes. द रीजन जहां जहां मुझे लग रहा है कि ये वर्ड का मीनिंग आप लोग को नहीं पता होगा, सो देयर आई एम यूजिंग हिंदी एज वर्ड। तो And इनके it's not about Hindi. If you could हाँ, just, अगर जब कोई टर्म डिफाइन कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, if you could just give डेली बेसिस वाले एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन हाँ, करोगे ना, हाँ, तो हाँ, शायद यस। हम बट कॉमर्स वालों यहाँ को पे समझ आ जाएगा। आई नो, आई नो, आई नो, बट यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, इट इज टोटली रिलेटेड विथ फॉर्मूला डियर। सो यहाँ ओके, पे मैं मतलब डे टू डे एग्जांपल दे ही नहीं पाऊंगी आपको। ओके, ओके, वेरिएबल और फिक्स के अलावा मैं कहीं एग्जांपल मैक्सिमम नहीं यूज कर पाऊंगी। ये आपको ओके। कब समझ आएगा? जब हम सम सॉल्व करने वाले हैं ना इनके नेक्स्ट सेशन में।
ओके तो ओके, थैंक आपको यू ये मैम। इजीली समझ आ जाएगा किस तरह से ये वर्कआउट होता है। हाँ, अगर कोई स्टडी मटेरियल सजेस्ट कर सकती हूँ इन केस आफ्टर योर सेशंस, इफ आई कुड फॉर फर्दर स्टडीज, प्लीज हाँ, सजेस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। नो प्रॉब्लम, आई विल डू थैंक यू। दैट। यस अरविंद। मैम एक्चुअली थर्ड पॉइंट डिटरमाइंस हाउ चेंजेस अनफोल्ड। सॉरी सॉरी, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। मैम थर्ड पॉइंट determines सॉरी, how changes in code. The third point determines how changes in code. किसमें है वो, वेर इट इज? मैम किसी में determines third point. Determine This this is third one, point. Yes, yes, this one, this one. yes, yes. Okay. See, determine how changes in cost. Determines मतलब हमें cost volume profit क्या बता रहा है कि किस तरह से cost में change हो रहा है with regards to volume and the profit. But here it could be considered both, that is variable and fixed. बिकॉज हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पढ़ते ही यही चीज बोली कि यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स दोनों आएगा। आपके वे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां से वेरिएबल आ रहा है, बट ऑब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कंसिडर कर रहे हो। सेम चीज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जब आप कंसिडर करते हो तो किस हिसाब से कॉस्ट में चेंजेस हो रहा है, दैट यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू कंसिडर दिस बोथ द कॉस्ट। ओके। Thank you. Thank you. Yes, Vikas. See, I don't want to move ahead with so many doubts, so better we'll clarify this. Ma'am, Yeah, ma'am, जी can बोलिए। you tell the full form of GAAP Yeah, IFRS? okay. हाँ, is generally accepted. Wait, let me just go to that slide itself. Okay, I'll write it over here. Don't worry. Wait. Generally accepted accounting International fund. principles. Okay, and the other one is international financial reporting standards. First letter will be all full capital. Now I am writing it for your reference. Now clear? Hmm. Okay. Mute yourself. Yes, Anuj. Okay. Thank you so much, ma'am. Ma'am, just wanted to ask, is marginal cost, can you please go to the last slide? First slide. Okay. Yes, Yeah. that we were doing. Uh-huh. This marginal cost and the cost that we were discussing is Cost almost volume same. profit. Yes. Almost same, but here if you can see, here we are only considering what? The variable. But when you talk about profit, your CVP, cost volume profit, you consider their fixed cost as well. That is the only difference. यहाँ पे आप वेरिएबल कंसिडर कर रहे हो, वहां पे आप फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कंसिडर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यस राहुल। राहुल। या हाय मैम, आवाज आ रही है? हाय। ओके। यस यस। और मेरे मेरे यहाँ दो क्वेरी था। पहला तो एक था ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन इस टर्म्स में क्या यूज हो रहा है? ब्रेक इवन मैंने आज पढ़ाया ही नहीं है। ओके, नहीं, मैंने एक टर्म देखा था ब्रेक इवन में। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नेक्स्ट सेशन सेकंड, में आई विल डिस्कस। हाँ। ओके। और सेकंड अगर सेकंड क्वेरी है कि यहाँ पर कॉस्ट तो आपने बताया कि जो प्रॉफिट निकल रहा है दैट इज कॉस्ट। इसके बाद इसमें जो तीन चीज हमने सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट जो हमने यहाँ यूज किया था, ये तीनों का टर्म्स क्या था? बस खाली एक टर्म्स एक हिंट दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे आप वो जो बोल रहे हो? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट व्हाट यू सेड जस्ट नाउ, बिकॉज़ इट yes, वाज yes, yes, yes. हाँ I told ma'am that here mentioned that cost. So cost related for what? Then profit related for what? And sales related for what? Cost इट्स means ऑल what? फॉर
It is It's a all profit. related with product. It's all related with your product, service, anything it could be. Let's say Okay. I decided to manufacture 100 pencils. Okay. So the cost for 100 pencil comes out to, let's say, 10,000. The volume would be 100. कितना मैंने प्रोडक्शन किया, एंड अब मैं इसका प्रॉफिट निकालूंगी बेचने के बाद. So that is P. So cost is how much? 10,000. Volume is how much? 100. And the sales will be profit will be calculated once the sales is done. Yes, Rahul. Is it clear? Clear. Got it. And thanks. Everything that we are discussing now, it's related with a product or service only. Nothing different from that. Yes, Vanshika. Yes, Abhijit. Ma'am, I want to know about the advantages and disadvantages of the managerial cost. Can you please repeat these things? Marginal cost. Sorry, marginal cost. See, advantages and disadvantages. Okay, I'll do that. Don't worry. Let me just first solve the small queries, then I'll come to this. Yes, Pulak. Unmute quickly, because I need to discuss this as well, and we have some question and answer Madam, session as well. I want to know that what is absorption cost Absorption cost वो cost होता है जहाँ definition. पे आप the where you consider fixed and variable cost both. मतलब जो cost change होते हैं variable है, that means which changes, that is also considered, and which remains static throughout the year, that is also considered. So that is your absorption cost. Yes, Anshika. Yeah, ma'am. Actually, I was asking, like, can I get this document that is visible on screen? Because, Yes. It will be uploaded. Yes, don't worry. okay, ma'am, where it is uploaded in LMS? Yes, it will get uploaded. Okay, sure. It's not uploaded now. The session is going on now. Later on, it will be uploaded. Yes, Varun. Ma'am, basically, I want to understand the PV ratio and contribution because in general, in business, we are talking about the gross margin and net margin. Is both related with the PV ratio and Yes. contribution ratio? Yes, both are related. Is you are getting my point, ma'am? Cost Yes. profit analysis is PV cost contribution. Yes, they both are related, Varun. PV Okay, so can you explain the correlation between gross margin and net margin also? See, in a business, the profit volume, that is PV ratio, we use it to understand what is the company's profitability. Okay. Whereas the contribution, we use it to understand what is your excess of your sales and the variable cost. Okay. Okay. So for that reason, we use both the thing, we use it for different ways. So when your PV ratio, let's say it's 25%, that means your profit volume with relate to that particular product is 25%. Okay. मतलब आपके प्रोडक्ट ने उतना प्रॉफिट आपको दिया कंपेयर टू द कॉस्ट दैट यू स्पेंट. And going ahead, I want to understand more about EBITDA margin also. That we don't have in this syllabus. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Yes, Shivam, quickly, please.
Yes, ma'am, 2 points are there. First point is this similar to the G calm, like it is live classes are sufficient. And Sorry, second sorry, one sorry. is this It is similar. it is live G calm like queries. It is live classes are sufficient. And second one I'm is not understanding what you're saying. Your voice is like not clear proper. You said something related to something G. You said PV. yes, Shivam. Quickly, Get and single and separate accounting mechanism. and second please is mute. Whoever is on unmute, please mute yourself. and second Shivam, question. Yeah, second question is can we tell you some study material from Nimbus library that we have access from Uttaranchal University LMS? that you can use it for your reference. I didn't got why you want to suggest me the books. Yes, Yeah, we Shivam. asked you a question. Is these live Uh, classes are sufficient? If not, should we this go live for any classes are sufficient. This live classes are sufficient enough. If you attend it thoroughly and understand it properly, those are sufficient enough. Yes, Subhashini. Good evening, ma'am. What is the difference between fixed and variable cost? Fixed cost is that which does not change, which remains same, like your salary, your electricity, sorry, not electricity, salary, the depreciation that we calculate on fixed installment method. Okay. Variable means जो बार बार change होता है, that is raw materials, your direct labor. So all those keeps on changing. You cannot say कि मुझे आज 1 लाख रुपीज का मटेरियल लगा तो नेक्स्ट मंथ भी 1 लाख का लगेगा. It would differ depending upon the production order that I get. So that is the difference between fixed and variable. So I think we can stop here and I'll explain this advantage and disadvantage. Whoever is on unmute, please mute yourself. Okay. See, advantages of marginal costing student is like इट इज इजी टू अंडरस्टैंड वाई बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं. यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट. सो आपका यहाँ पे एडवांटेज ये हो रहा है कि आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके कैलकुलेशन करने वाले हैं. And because of that, you can easily make a decisions like your pricing decisions you can take. You can also decide whether you have to produce that product within the company or you have to buy it some other from the other vendors. Okay. Also, there is no problem of over and under absorption because आपको पता है सिर्फ variable cost ही मुझे use करना है यहाँ पे. And you can link this marginal costing with other techniques like standard costing, where you compare your actual performance with the targeted one, that is the standard one. Also, budgetary control, you can use it with marginal costing. And also, it tells you what is your contribution of the cost to the profit. Now, since हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यूज कर रहे हैं, so that indirectly comes to an disadvantage also. Why? Because variable cost को जानने के लिए पहले आपको cost को segregate करना होगा. You have to differentiate that. So that technical difficulty will be there. Also, tax authorities don't consider the valuation of stock which is done because they want valuation of stock at higher level. Because जब stock को आप high value पे price out करोगे, they will get more taxable income. And contract costing में हम इसे क्यों यूज नहीं कर सकते? Because that is contractual. The fixed cost and variable cost keeps on changing over there. It cannot be static. And जो cost आपके short run में fixed and variable है, long run में हो सकता है, that could change. So it's just an assumption that you are making. That's again a disadvantage. Okay. Fine. So let's do one quick question answer session.
to understand our concept. Host, you can on the chats so that they can answer this. Which of the following is not included in marginal costing? Marginal costing मतलब वेरिएबल, ओके, अंडरस्टैंड दैट. आप कौन सा कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं करोगे? दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स और डायरेक्ट लेबर. आंसर इट इन द चैट बॉक्स. Sorry, just a minute. I'm so sorry. Yes. Host, have you enabled the chat box? What is happening? Let's just stop the share. 1 minute. Sure. Saraswati. Yeah, please on it so that they can answer. Yeah, I think the chat is enabled. Yes. Very good. Super, super. The answer is C. Yes, because marginal costing में हम क्या consider करते हैं? Again and again I am repeating, only variable. तो जो आपका fixed cost है, it will not be considered. Super, great. Okay. Absorption costing का दूसरा नाम क्या है? What is the other name of absorption costing? Very good, super. That is full costing. Because why full costing, students? Just think logically. आप यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर रहे हो, फिक्स्ड भी यूज कर रहे हो. So you are clubbing both. Okay, great, super. So let us check our answers. Yes, our answers are correct. Fixed overhead is not included in marginal costing, and full costing is the another name of absorption costing. Super. Right. So I think all your doubts are resolved. Whatever you all had. Fine. So in the next session, we are going to complete the remaining topics of this unit. Also, we are going to discuss some sums with respect to PV ratio, BEP, that is break-even point also, so that you understand it more clear. Okay, fine. So thank you, students, for attending today's session. We will meet in the next session. Thank you. Have a great day. Take care. Recording stop.